Hello students, welcome back in our geography class. Today we are going to continue our ninth chapter, secondary occupation. And our today's topic is textile industry. Students, for the survival of human, the three basic things required: food, shelter and clothes. Right? It means after food and shelter, the clothing is the main requirement of human being. So of course, this is a kind of oldest industry of man, and although it is started as a cottage industry and a small scale industry, but now due to the technological advancement, presently it has become a highly developed industry in the major industrial countries of the world. Got it? So students, modern textile manufacturing originated firstly in Britain during the Industrial Revolution, and for developing this particular industry at that particular time, the Britishers start colonizing those countries in which the raw material means cotton is easily produced. India is one of them. So this industry is spread from Britain to other countries of the world. Here four kind of textile industry included according to raw material. Firstly, cotton textile, then woolen, silk and jute. So let us start with the cotton textile industry of the world. Student, the cotton textile industry is the most important industry in the world. The raw material of cotton textile is cotton, and other than cotton, the coal and hydroelectricity required for power, cheap and skilled laborers are required in abundance. For finer material, humid climate and the sea breeze is one of the necessity, and of course large quantity of pure water, extensive market for the consumption of textile and government encouragement. These are some of the basic requirements for the establishment of cotton textile industry. So although cotton yarn and cotton textile are manufacturing in basically all the tropical and the subtropical countries, included China, India, Russia, Japan, USA. These are the major country in which cotton textile produced. So in India also, some of the major area famous for the cotton textile. But let's start with the first position. China holds the first position in the cotton textile, and the major centers are Shanghai, Canton, Tsingtao, Princeton, Shantung and Darin. These are some of the major centers in China for cotton textile. Now India is holding second position after China, and the main centers in India are Mumbai, Ahmedabad, Sholapur, Nasik, Surat, Baroda, Nagpur, Indore, Warangal, Gwalior, Kolkata, Delhi, Kanpur, Bhilwara, Byawar, Pali, Coimbatore, Madurai, Salem, Bengaluru, etc. These are some of the major centers of cotton textile in India. Students, USA. In USA, some of the major producing areas are New England, Central and Atlantic states, and South Appalachian states. So at present, this industry has to compete with artificial fibers. Means nowadays, some of the artificial fibers like nylon, rayon, etc. giving a huge competition to the cotton textile. They are much demanded.
So due to this negative trend is seen in this industry, basically in the negativity, a kind of negativity seen in the cotton textile industry. So from the developed nations, the shift is noticed in the developing nation, and the basic reason is labor cost. Right? Now let's move to the other industry. The next one is woolen. So after cotton textile, the woolen is one of the major industry. It is a rapidly growing industry because the entire globe is having majorly two kind of climate, summer and winter season, means tropical and temperate polar climate. So the temperate and polar climate, the winters are long, so the woolen textile is necessary. Students, it is the second largest industry in the world after cotton textile, and woolen textile industry after 17th century, it's developed very rapidly. Even after Second World War, after invention of the modern machines in Japan, this industry accelerated. It means the development of its industry accelerated. Women textile industry is an important industry in terms of value. Value के according ये बहुत important industry है. Although this industry is only 10 to 15% of cotton textile, लेकिन इसके बावजूद अगर हम लोग कंपेयर कर लें कॉटन टेक्सटाइल से इसको, तो इसका मार्केट सिर्फ 10 to 15% होगा कॉटन टेक्सटाइल के. इट मीन्स कॉटन टेक्सटाइल आर मोर यूजिंग इंडस्ट्री, राइट? So market and easy approach to raw material are the most important factor for the location of woolen industry. And other than market and easy approach, skilled labors, fresh water supply, availability of power resources, capital, transportation. These are some of the other factors. Students, about two-thirds of woolen textile industry concentrated alone in Europe. जितना भी एंटायर वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका 2/3 हिस्सा अकेले यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है. So at present this industry has developed in more than 40 countries, and out of these 40 some of countries are Russia, China, Japan, Germany, India, United States of America, Romania, Poland, Great Britain, etc. These are some of the major woolen textile producing industry in the world. And in the southern hemisphere, only Australia, New Zealand, South Africa, Argentina and Uruguay are the famous ones. These countries having the tropical climate and sparse population. This is the feature of the southern hemisphere country. Now, let's move to the other textile industry, silk textile. Silk textile industry initially developed as a cottage industry in China. It means China is the country who introduced silk fiber to the world. And from here, this industry developed in the other countries of the world. It took the form of factory industry with the invention of automated looms. Otherwise, in the earlier time, this is entirely depend upon human labor. So, since the beginning of silk clothes, it have been luxury article for the wealthy people only. But hence, this industry is a limited and concentrated industry as compared to cotton or woolen textile. जब ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था सिल्क टेक्सटाइल, क्योंकि बहुत ही शाइनिंग सॉफ्ट मटेरियल होता है और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिस्टम होता है, इसी वजह से ये सिर्फ वेल्दियर पीपल के लिए एक लग्जूरियस आइटम था. और आज भी कुछ इसी तरीके की स्थिति है. सिल्क इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है या बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री नहीं है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है. So, the demand of cotton and woolen textile is more if we compare the silk industry. Now, let's discuss the silk obtaining system.
Students, natural silk is obtained from the substance derived from the saliva of an insect called bioxymu. Natural silk एक इंसेक्ट के सलाइवा से बनता है. इंसेक्ट है बायोक्सिमो. दिस इंसेक्ट विच सर्वाइव ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी. ये वो इंसेक्ट है जो कि मलबेरी प्लांट की पत्तियों पर सर्वाइव करता है. मलबेरी शहतूत. एंड द insect wrap the sticky substance secreted from its mouth over its body. अपने मुंह से निकला हुआ एक स्टिकी सब्सटेंस ये इसको अपने चारों तरफ बॉडी के लपेटना शुरू कर देता है. सो एट दिस स्टेज जब वो अपने चारों तरफ वो स्टिकी सब्सटेंस लपेटता है, दैट टाइम इट इज नोन एज कोकून. द मैच्योर्ड कोकून इज बॉइल्ड इन वाटर. जब कोकून मैच्योर हो जाता है तो उस मैच्योर कोकून को उबलते हुए पानी में डाला जाता है. क्यों? टू सेग्रीगेट द रैप्ड सिल्क फ्रॉम द इंसेक्ट. जो रैप्ड सिल्क है उसको अलग करने के लिए इंसेक्ट से. एंड देन इट इज रैप्ड टू फॉर्म द थ्रेड. और उसके बाद उस स्टिकी सब्सटेंस को अलग करके थ्रेड में रैप किया जाता है. एंड आफ्टर दिस सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आफ्टर दिस द क्लोथ्स आर मेड. के बाद उस रैपिंग थ्रेड से क्लोथ बनाया जाता है. तो द एंटायर प्रोसेस डन इन 3 phases. Firstly, the production of cocoon, then wrapping of silk thread from the cocoons, and the third one, weaving of silk textile. This is the entire 3 phases done in the process of silk textile manufacturing. So students, among the raw silk producing countries in the world, Japan produces around 50%. इंट्रोड्यूस चाइना ने किया था, लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जापान कर रहा है. एंड चाइना स्टैंड्स second position with the production of 28%, Russia 6%, India 6%. It means these are some of the major productive nations. Silk textile industry is mainly influenced by the two things, demand and market. अगर डिमांड होती है और मार्केट नियर बाय होता है तो इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, या फिर इसका प्रोडक्शन कम होता है. So silk textile are quite expensive and this industry has flourished in the countries with the sufficient child labor. ये एक्सपेंसिव इंडस्ट्री है और ज्यादातर वहीं फ्लरिश होती है जहां चाइल्ड लेबर इजीली मिलती है. मेजर सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर जापान, यूएसए, फ्रांस, चाइना, ताइवान, जर्मनी, इंग्लैंड एंड इंडिया. Eastern Asian countries produces nearly 85% of the world's raw silk, whereas these countries produce only 35% of silk textile. यहाँ ध्यान देना, ये जो ईस्टर्न एशियन कंट्री हैं ये वर्ल्ड का रॉ सिल्क 85% प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन उस रॉ सिल्क से सिल्क टेक्सटाइल सिर्फ 35% प्रोड्यूस करती हैं. जापान, यामागाता, फुकुशिमा, निगीता, किनकी एंड क्योटो, these are the major center of weaving sector silk textile. So silk industry has been developed in China since ancient period, right? ये हमने earlier बताया था. और during the ancient period, China's silk reached Europe through the land route, and that particular land route is termed as silk route because of the transportation of silk. चाइना से यूरोप तक जिस लैंड रूट से सिल्क को ट्रांसपोर्ट कराया गया उस रूट का नाम ही हिस्टोरियंस ने सिल्क रूट रख दिया. एंड द मेजर सेंटर ऑफ चाइना आर शंघाई, क्वांगवाई एटसेट्रा. इन द यूएसए, पेंसिल्वेनिया इज द लीडिंग स्टेट इन सिल्क टेक्सटाइल. पेंसिल्वेनिया यूएसए का सबसे लीडिंग स्टेट है. पेटरसन सिटी इज द लार्जेस्ट सिल्क गारमेंट मैन्युफैक्चरर. वहीं पेटरसन सिटी लार्जेस्ट सिल्क गारमेंट मैन्युफैक्चरर है. तो द पेटरसन सिटी इज ऑल्सो नोन एज सिल्क सिटी. द सिटी ऑफ लायंस located in the Rhone Valley is the largest silk textile manufacturer in France. फ्रांस का सिटी ऑफ लायंस जो कि रोन वैली के आसपास है, रोन रिवर बेसिन के पास, ये भी सिल्क टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर में लीडिंग है. In India,
The major silk producing areas are Kolkata, Mysore, Bangalore and Chennai. Alright, now last textile industry, jute. Student, jute industry is associated to the production of sack, jute cloth, thick daris, etc. रस्सी आती है, रस्सी, जूट के कपड़े और दरी वगैरह बनाने के लिए जूट टेक्सटाइल का या जूट फाइबर का यूज होता है. जूट इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस चीप, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल मटेरियल. जूट इंडस्ट्री में सस्ते दामों पर स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मटेरियल बनाया जाता है. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट पैकेजिंग इंडस्ट्री. एट प्रेजेंट some of the jute fiber is used for garment as well, and other products are made by blending high quality jute with cotton or wool. जूट को कॉटन और वुल के साथ ब्लेंड करके आजकल हाई क्वालिटी गारमेंट भी बनाए जा रहे हैं. स्टूडेंट, इंडिया एंड बांग्लादेश आर द पायनियर्स इन जूट कल्टीवेशन. इट मीन्स दे आर प्रोड्यूसिंग हाई अमाउंट ऑफ जूट इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री. या हम ये कहें कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया और बांग्लादेश ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है जूट का. And basically the Brahmaputra valley and deltaic region of Ganga are the major reason for the jute production. The industry is developed in countries other than India and Bangladesh. The other countries where the jute production is famous are Germany, Great Britain, France, Italy, Belgium, Sweden, Japan, Canada, USA, China, Thailand. But India and Bangladesh are the major jute product exporters of the world. सबसे ज़्यादा जूट का जो एक्सपोर्ट होता है, प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट होता है, उसमें भी लीडिंग है इंडिया और बांग्लादेश. So hope you guys understand the entire term well, this particular topic, textile, and from the other videos, I think you are now able to understand the entire chapter well. So thank you and have a nice day.